we think that now, at least over the last 6 to 8 months time, we're seeing very good liquidity, very good interest. A lot of people are buying and selling microcap companies. जब आप लोगों को पूछते हो, माइक्रोकैप क्या होता है, वो बोलते हैं बहुत छोटी कंपनियां होती है, बट एक्चुअली द एवरेज साइज ऑफ अ कंपनी ना माइक्रोकैप इंडेक्स इज 3000 crores मार्केट कैप। 5 साल पहले ये बहुत ही छोटा सेगमेंट है, लेकिन अगर आप आज कंपेयर करते हो, ये सेगमेंट बहुत ही बढ़ गया है और जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सेगमेंट में भी बहुत बड़ा है। तो उसके हिसाब से हमने ये फंड लॉन्च किया है, जहाँ पे पैसिव स्टाइल में आप माइक्रोकैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। Hey guys, welcome to Wealthcast. This is yet another super fascinating episode in store for you. And I am so excited, so stoked to welcome our super special guest with us. So with us today, we have Pratik Oswal. He's the head of passives at Motilal Oswal Asset Management Company. Pratik has been spearheading the passive initiatives for Motilal Oswal AMC and has been doing a fantastic job at bringing more and more innovative passive strategies to the retail investors at mass, at scale. So Pratik, a very, very, very warm welcome to the Fisdom Wealthcast. Thanks Nirav for having me out here. I look forward to having a great conversation today. So Pratik, you have really made the headlines with this microcap passive proposition that Motilal AMC has come up with. But before we delve deeper into it, for the benefit of our audience, एकदम साफ शब्दों में, सरल शब्दों में अगर आप एक्सप्लेन कर पाओ कि ये माइक्रोकैप होता क्या है, what exactly are microcaps? Because we have heard of small caps, but that's all that we know. कि क्या are these smaller than small caps? What's it all about? हाँ जी, कोई भी माइक्रोकैप्स के बारे में बात नहीं कर रहा था आई थिंक लास्ट ईयर, बट सेबी ने ये सिर्फ कैटेगराइजेशन अभी दिया है, जहाँ पे इंडिया के जो टॉप 100 कंपनियां हैं वो कैटेगराइज होते हैं लार्ज कैप्स। उसके बाद जो 101 to 250 वो जो रैंक वाले कंपनी है वो होते हैं मिड कैप्स, और उसके बाद होते हैं स्मॉल कैप्स। लेकिन स्मॉल कैप्स भी अभी 250 to 500 तक होते हैं। तो सो एवरी स्टॉक दैट्स बियॉन्ड 500, जो इंडिया के टॉप 500 कंपनियां हैं, दैट वो है करीबन 95-96% ऑफ द मार्केट कैप। बट उसके नीचे जो होते हैं उनको माइक्रो कैप बोला जाता है। सो एनी कंपनी दैट्स बियॉन्ड द टॉप 500 कंपनीज इन इंडिया, लिस्टेड कंपनीज इन स्टॉक मार्केट, दे आर माइक्रो कैप कंपनीज। सो द आइडिया बिहाइंड ये जो हमारा फंड है, बहुत सारे आपके जो म्यूचुअल फंड है जो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप में करते हैं, स्मॉल कैप में करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि कंपेयर टू वेयर दिस सेगमेंट वाज 5 years ago, 5 साल पहले ये बहुत ही छोटा सेगमेंट है, लेकिन अगर आप आज कंपेयर करते हो, ये सेगमेंट बहुत ही बढ़ गया है और जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सेगमेंट में भी बहुत बड़ा है। तो उसके हिसाब से हमने ये फंड लॉन्च किया है, जहाँ पे पैसिव स्टाइल में आप माइक्रो कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो यू आर इन्वेस्टिंग इन द companies that are beyond 500. So the 501 to 750. So 250 companies is what you're investing in this fund. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो अगर मार्केट कैप से डिसेंडिंग ऑर्डर की एक लिस्ट बनाई जाए तो टॉप 500 के बाद जो 250 स्टॉक्स आते हैं उन्हें ये माइक्रो कैप कैटेगरी में आपने लिया हुआ है। तो प्रतीक, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड्स देखते रहता हूँ, उनके पोर्टफोलियोज देखते रहता हूँ, एक समझ में आता है कि ये जो माइक्रो कैप स्टॉक्स है, इट हैज ऑलवेज बीन अराउंड, बट काफी ऐसे एक्टिव फंड मैनेजर्स खुद के पोर्टफोलियो में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे माइक्रो कैप स्टॉक्स इंक्लूड कर ही रहे थे। सो इट इज नॉट एज इफ इट इज अ टोटली अनचार्टेड टेरिटरी और कंप्लीटली अननोन लैंड। कहीं ना कहीं some or the other way investors used to get some exposure to some select microcap stocks. So now my bigger question is, what made you think that you must create a basket of only microcap stocks? One, and two, इसके साथ ही another extension of this question is why now? इतने सालों से microcap तो हमेशा से ही थे, अब जाके क्यों? So was there any relevance in terms of timings, or it was purely coincidental? And what is the merit of putting this together in a single basket? Yeah, so we at Motilal Oswal, we were the first ones to have launched in 2019. So if you look at the passive investing, अगर आप 2018 में जाते, 2019 में आते, पैसिव इन्वेस्टिंग होता था निफ्टी 50 और था गोल्ड, बस ये दो थे। There was not a lot of options if you had to invest in categories.
आज आप देखोगे, आप इन्वेस्ट कर सकते हो मिड कैप में, स्मॉल कैप में, मल्टी कैप में, इन्वेस्ट इन मल्टी एसेट सॉल्यूशंस, इंटरनेशनल फंड्स, फिक्स्ड इनकम। तो बहुत सारे कैटेगरीज आज बन गए हैं। इनफैक्ट हमने ही करीबन 29-30 फंड लॉन्च किया है सिर्फ पैसिव कैटेगरी में, लास्ट 3 या 4 सालों में। एंड वी बिलीव दैट हम ये सेगमेंट को ट्रैक कर रहे हैं लास्ट लास्ट 1 या 1.5 साल से। लेकिन हमने देखा है कि ये सेगमेंट हिस्टोरिकली बहुत छोटा था। तो इसके हिसाब से हमने हमारे लिए आई थिंक लिक्विडिटी का इशू विच विल टॉक अबाउट लेटर, liquidity, we thought would might be an issue. Size of the companies might be an issue, especially if you had to launch a focus fund in the microcap space. So we think that now, at least over the last 6 to 8 months time, we're seeing very good liquidity, very good interest. A lot of people are buying and selling microcap companies. I mean, जब आप लोगों को पूछते हो माइक्रो कैप क्या होता है, वो बोलते हैं बहुत छोटी कंपनियां होती है। बट एक्चुअली द एवरेज साइज ऑफ अ कंपनी ना माइक्रो कैप इंडेक्स इज 3,000 crores मार्केट कैप। सो बहुत ही ग्रोथ हुआ है सेगमेंट में। और इसके हिसाब से इन्वेस्टेबिलिटी भी बहुत बढ़ गई है सेगमेंट में, इसलिए हमने अभी लॉन्च किया है बिकॉज वी स्टडीड द इंडेक्स। हमने वी वर द फर्स्ट वंस टू लॉन्च द स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 2019 में, नो 19 या 2019। and we had similar problems. तभी भी I think average company in a small cap index was about 4,500 crores. आज वो हो गया है 12-13 हजार crore. So you see a lot of growth, and we expect to see similar growth in the small cap index over the next 4 to 5 years. I think it's a very interesting segment. I think explored है segment. बहुत सारे small cap funds में micro cap stocks है, लेकिन द प्रोपोर्शन बहुत छोटा है। मतलब यू सी एलोकेशन ऑफ 5, 10, 15% मैक्सिमम। so mostly you'll have small caps. In fact, most small cap funds में you'll have a lot of large cap stocks, mid cap stocks. पर ये एक डेडिकेटेड फंड है, तो जिसी को भी एसेट एलोकेशन एक माइक्रो कैप कैटेगरी में फंड देना है, ये आपको 100% एक्सपोजर देगा ये इंडेक्स में। So I think the focus towards only micro cap stocks is a USP for this fund. Absolutely. So Pratik, when we talk about USPs, एक बहुत ही एक सिंपल सा USP सारे इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर, वो होता है परफॉर्मेंस, राइट, और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। सो जनरली एक माना जाता है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मिड कैप्स हैव द पोटेंशियल टू आउट परफॉर्म लार्ज कैप्स एंड स्मॉल कैप्स हैव द पोटेंशियल टू आउट परफॉर्म मिड कैप्स. So can we extend the same logic and say over a longer period micro caps will outperform or have the ability rather to outperform small caps over longer period? Is this the right perspective to look at life here? Yeah, I think what we've seen is that normally there is definitely this obviously that the theory of small companies, if you look at size as a factor, हमने देखा है कि small companies have a much better growth potential than large companies. And actually, if you've seen the growth also, the large cap index over the last 4 years has grown by about 1.5-2 times, whereas the small cap index on average has grown by 3 to 4 times. I think 3.5 to 4 times. So we've always seen in history, obviously the small cap and micro cap is very volatile. So आप देखोगे कि बहुत सारे many years you'll see very deep, very long drawdowns, or short term or you'll have some I think short term pain or long term pain in the small caps tend to be much higher. So yes, in interim anything can happen, but if you hold it for a very long time, if you're a risky investor, then what we've seen is that yes, small caps do outperform or small and mid does outperform large caps. In fact, even in this fund, हमने जो फंड लॉन्च किया है, हमने देखा है कि ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, इनफैक्ट हमें ये फंड में तो इवन शॉर्ट टाइम पीरियड we've seen that it's outperformed large caps, mid caps and small caps. So I think outperformance is there. I think people should really look at the risk of this fund as well as the return. I think people who are able to stomach the volatility should be ideally the ones who should look at this fund. But yes, I think definitely going forward, we at least expect this index to at least outperform a lot of the under indexes, but at obviously higher volatility. Right, correct. So Pratik, one thing, you emphasized a lot on volatility, and I have been wondering about this aspect of the proposition also. Like personally, if someone presents to me amazing returns, मेरा पहला सवाल होता है कि risk क्या है? Returns are generally they go hand in hand with risk, and higher return potential also implies higher expected risk in a certain investment. So काफी बार जब भी micro cap investing की बात की जाती है,
थोड़ा सा एक मन में एक पहला सवाल उठता है कि इसमें रिस्क तो बहुत ज्यादा होगा। एंड ऑब्वियसली हर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता ही है, एक साधारण ये तो समझ ही सकते हैं कि इसमें वोलेटिलिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि मिड कैप्स आर मोर वोलेटाइल देन लार्ज कैप्स, स्मॉल कैप्स मोर वोलेटाइल देन मिड कैप्स, एंड सो वन कैन ओनली एक्सपेक्ट अ नेचुरल प्रोग्रेशन कि ठीक है चलो माइक्रो कैप विल बी मोर वोलेटाइल। बट इसके अलावा कुछ ऐसे रिस्क है जो कि बहुत ज्यादा एनहांस हो जाते हैं माइक्रो कैप सेगमेंट में जाते जाते ही। एक का जिक्र आपने किया था कुछ देर पहले, लिक्विडिटी, कि काफी ऐसे काउंटर्स होते हैं जो कि लिक्विड नहीं होते हैं। लिक्विड नहीं होने का मतलब ये होता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर ऑडियंस, इज यू मे नॉट बी एबल टू बाय और सेल दी स्टॉक एज एंड व्हेन यू रिक्वायर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ काउंटर पार्टी। बिकॉज अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो कोई बेचने वाला होना चाहिए, और कुछ बेचना चाहते हो तो कोई खरीदार होना चाहिए एट एनी पॉइंट। दिस इज अ वेरी क्रूड वे टू पुट इट, बट दिस इज गुड इनफ फॉर दिस डिस्कशन। सो एक लिक्विडिटी रिस्क, प्रतीक, एंड अनदर क्वेश्चन इज अराउंड सर्वाइवल। देखिए जो लार्ज कंपनीज है वो तो सालों साल चलते जाते हैं, हमने देखा देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज that that go bust or shut down their operations, the large ones, large cap index में उससे काफी थोड़ा सा ज्यादा ऐसा मोर्टेलिटी रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है आपका मिड कैप में जाते जाते, और स्मॉल कैप में सर्वाइवल रेट और भी कम हो जाता है। बिकॉज अगर आपके स्मॉल कैप बास्केट में 250 की कंपनी है, हो सकता है यहाँ पर काफी ऐसे कंपनी हो जो कुछ सालों के ऑपरेशंस के बाद वो they are unable to operate or they are unable to continue remaining listed. The same risk also further gets enhanced and magnified in the microcap segment. तो ये दो रिस्क पे बहुत सारे सवाल है। आई पर्सनली एम वेरी इंक्विजिटिव दैट व्हाट इज द राइट पर्सपेक्टिव टू लुक एट दिस रिस्क। ये रिस्क तो है, और अगर नहीं है तो प्लीज वी वुड लव टू हियर मोर ऑन दैट, बट व्हाट इज द राइट वे टू लुक एट इट, लिक्विडिटी एंड सर्वाइवल? Yeah, so I think you've asked a very good question. I think slightly digressing. I think what you said is very interesting, because when you say risk, it means so many things. Risk means volatility. Risk means drawdown. Risk means concentration risk. Risk means liquidity risk. So I think most people tend to equate risk with volatility, right? What's funny is volatility is understood the least. So I think in this case, yes, I think microcaps are more volatile. I think over the last 15 years हमने देखा है कि इसका volatility is approximately 10% more than what you would expect in large caps, which is not a lot, to be honest. But what we've seen is that drawdowns are very deep and a bit more long term. अगर आप सोच सकते हो, बहुत से जो इन्वेस्टर्स है जो इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड सपोज द इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू अ बैड साइकिल, जो होता रहता है हर 5 से 10 सालों में, लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स टेंड टू शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम स्मॉल कंपनीज टू लार्ज कंपनीज, बिकॉज लार्ज कंपनीज हैव लॉट मोर स्टेबल बैलेंस शीट्स, उनका बिजनेस मॉडल बहुत स्टेबल है, तो बहुत सारा पैसा स्मॉल और माइक्रो कैप से लार्ज कैप पे जाता है, और इसलिए ड्यूरिंग बैड पीरियड्स small caps and micro caps tend to do bad, but the recovery is also strong when things are good. So I think in this case, as you said, liquidity is I would say a big risk, and this risk will play out in tracking error, tracking difference. हमने देखा है कि हमारा काम है माइक्रो कैप इंडेक्स को के साथ मैच करना, and that is our main job, to be honest. Our job is to not to give investors crazy high returns. So I think when we are buying stocks which have very low liquidity and we're trying to put in a lot of money, yes, that is a problem. And what we've seen is that even with this fund, ये हमारा जो fund है, we don't we will see size constraints after a period of time. So हम देखेंगे अभी नहीं, but once the fund crosses say 400 or 500 crores, we might limit lump sums, because as I said, हमारा job है sort of to limit or minimize tracking error. So I think वो एक risk gets mitigated about liquidity. The second risk is about survivorship bias, and मेरे हिसाब से survivorship bias is actually present in all indexes. अगर आप you see the Nifty 50 10 years ago versus today, बहुत ही अलग है. If you see the Nifty 50 in 2005, 2006, there's maybe 5 or 6 stocks that are common today. The rest have all changed. But yes, it's much higher in microcaps. So the survivorship bias actually is a great thing for index fund. क्योंकि क्या होता है, इंडेक्स फंड में अगर एक कंपनी अच्छी नहीं is not doing well, it gets kicked out of the index instantly. तो हमारा ये जो फंड है,
इसमें churn is relatively higher, तो हर rebalance में approximately 20% of the fund is rebalanced. So I think that the churn is high, and that makes sure that जो कंपनियां जो अच्छा नहीं कर रही है वो बाहर जा रही है, और जो कंपनीज आर डूइंग वेल दे कमिंग इन द इंडेक्स. दैट्स वन. सेकंड इज ये फंड में बहुत concentration risk है ही नहीं. If you see the largest holding in this fund, which is I think it's Karnataka Bank, it's about 1.6%. Now the top 10 companies in this index is only 11.6% holding. और आप 250 कंपनियां होल्ड कर रहे हो, तो इसके हिसाब से जो कॉन्सेंट्रेशन एक या दो या पांच कंपनियां अगर बस जाए, तो दैट डज नॉट हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन योर रिटर्न्स ऑफ दिस फंड. So I think the good thing about, and this is very prevalent for mid and small and micro caps, companies tend to be a lot more sort of I think similar sized. So उसके हिसाब से I think ये जो एक तो rebalance होते हैं, तो that's very good. And दूसरा है size of the company, your largest percentage holding is very small. तो उसके हिसाब से आपको ज़्यादा मतलब if a company goes bad, it won't make a big difference to your portfolio. Yeah, I feel some very pertinent and amazing points made there. For the liquidity thing, obviously, you highlighted that हो सकता है एक point के बाद जाकर size एक constraint हो सकता है. So that obviously, it is the fund management's discretion to ensure कि उनका tracking error कम से कम हो, and you continue delivering the value that you are attempting to. And some very interesting points made on how do you handle the survivorship. एक तो पहला ये जो आपने नजरिया दिया है, देखने का perspective दिया है कि it is all the more efficient in an index fund because rebalancing time to time होते जाता है. So at any given point in time you are in very good stocks that is possible, that is possibly good enough to remain in an index is what is in your portfolio. That's one thing. And another very interesting thing you spoke about is the percentage allocation to every stock in this pack, because it is a 250 pack, and because the diversification is so much. So आपका जो highest weightage है, you pointed out it's around 1.6% to a single stock. So अगर एक दो तीन चार में भी कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, तो at a portfolio level सारा कुछ impact नहीं होगा. So the diversification ensures that if there is any risk emanating on the survivorship front, that is very well taken care of by the diversification. I feel very interesting points. So now that you have given me such interesting perspectives on such tough questions, I want to press the gas on and increase the toughness of questions. See, there is this one thing, I've been speaking with investors, and one thing that many investors have also been wondering about is जब भी माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग करते हैं ना, तब एक सबसे पहला चीज, ये स्लाइटली सैवी इन्वेस्टर्स के लिए है, जो काफी समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं और समझते हैं स्पेस को. उनका ये सवाल होता है कि जो माइक्रो कैप स्पेस जो होता है वो बहुत ही रिलेटिवली अंडर एक्सप्लोर्ड होता है वो स्पेस. एंड जरूरी नहीं कि इतने ब्रॉड एंड ऑफ द मार्केट में जो भी है वो सारा सोना ही है. इसको बहुत ही छान छान के छाट छाट के देखना पड़ता है. एंड दिस इज अ प्लेस वेयर मेनी एक्टिव फंड मैनेजर्स try and generate an alpha from. अगर आप देखोगे काफी small cap fund managers are willing to dive beyond and explore this end of the market to find some really valuable bets and valuable plays here, right? But it takes immense amount of research and immense amount of coverage, considering that जो major broking houses है वो वैसे भी cover नहीं कर रहे हैं इसको. So बहुत subjective basis पे, independent basis पे research करना पड़ता है value unearth करने को. So, the bigger question is, what is the value proposition of a passive strategy at this end of the market, that is the microcap end of the market, wherein there seems to be a very strong case made for value being only an active selection. कि अगर आप एक्टिवली स्टॉक सिलेक्ट करते हो तो ही परफॉर्मेंस आ सकता है. ये जो एक सॉलिड सा एक केस बना हुआ है, इसके अगेंस्ट में ये पैसिव स्ट्रेटेजी कैसे स्टैकअप करता है, और इसको पोजीशन करने का सही तरीका क्या है पैसिव स्ट्रेटेजी को? जी, तो मेरे हिसाब से आई थिंक अपॉर्चुनिटी है स्टॉक पिकिंग का माइक्रो कैप सेगमेंट में. आई थिंक साइज कंस्ट्रेंट्स है माइक्रो कैप्स में. अगर समवन वांट्स टू टेक अ 5% 10% स्टेक इन द कंपनी, तो वो शायद they may not be able to take. So I think मेरे हिसाब से I think there'll be a lot of micro cap funds being launched over the next few years where there'll be a lot of alpha making possibilities. मेरे हिसाब से क्या है, passive में you're getting the simplest option. So for example, if you look at a actively managed small cap fund,
No, you will see only 65, maximum 70% of the stocks in small caps. The rest of it you'll see in large caps, mid caps, micro caps. So, obviously, I'm not saying that they're bad. They've done phenomenally well and they should be invested in. But we are looking at a 100% micro cap category. So I think if someone wants to create an asset allocation of micro caps, say 5% holding, then this is a very pure play fund that you can invest in. एक ये है. दूसरा है कि I think still I feel that the information in this segment is not that much. अगर आप देखते हो एनालिस्ट कवरेज इस सेगमेंट में बहुत कम है एंड एवरेज अबाउट 250 कंपनीज almost more than half, almost half or maybe a little bit more than half of the companies have zero analyst coverage. Yes. So for a fund manager to make decisions, it's very tough because there's no one who's covering the stock. How do you do research? So I think that's one of the main legs to why, and I think you'll see a lot more analysts coming over the next few years. But abhi kabhi, I think you won't see a lot of so these. It's unexplored because it's there's not a lot of analyst coverage. Or iske hisab se, holding a passively managed fund, you're basically relying on sort of the of survival of the fittest. The bigger companies will stay, the smaller companies will be wiped out. And I think yes, a lot of the big companies might not be credible. A lot of the big companies might not be have good governance. But I think over time we've seen at least in Indian markets that the companies that are credible and have high governance tend to do well. So, and I think the size of the segment is such that you are seeing much better quality of names coming in. So I think microcaps में जो was I think that brand equity था कि ये अच्छे quality stocks नहीं है. Yes, still there is a huge quality component which is not good, but मेरे हिसाब से वो change हो रहा है. Right now you're seeing good quality companies, high growth companies coming in. So I do feel that passive is a very simple approach. लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है. You can just go and buy the fund, and you can hold it for 30 years. Which fund can you hold for 30 years? It's very difficult because performance अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा. But this you can hold it for 25, 30 years and never underperform. It's low cost, and we've seen by its performance also that's done well. So I think simplicity and long term is something which could be and also it is one of the features to why you should invest in a passive fund. Oh, amazing. So Pratik, now that you said one can hold it for 30 years also, if you could also specifically say that what is the ideal minimum holding period that an investor should look at when entering or allocating to this fund. So two things, basically one, what is the minimum period that an investor should be willing to commit to with this fund, and two, what kind of an investor is this best suited to? किस तरह के इन्वेस्टर्स को बेस्ट सूटेड है? जो बहुत ही एग्रेसिव है केवल उनके लिए है, या जो थोड़े बहुत मॉडरेट या थोड़े कंजर्वेटिव से इन्वेस्टर्स है उनके लिए भी सही है? सो व्हाट्स द सही टाइम पीरियड जिसके लिए होल्ड करना चाहिए, बेयर मिनिमम, एंड व्हाट इज द रिस्क प्रोफाइल टू व्हिच इट इज बेस्ट सूटेड? हाँ जी, सो ये हाई रिस्क इक्विटी कैटेगरी का फंड है. सो definitely 5 साल is absolute minimum. I think you should not even look at anything under 5 years. Normally people say 3 to 5 years time. I think equity should be 5 plus. In this fund definitely 5 plus. I think we shouldn't even think about less than 5 years because क्या है, ये segment में volatility ज़्यादा है, cycles भी ज़्यादा आते हैं. मेरे हिसाब से minimum 5 to 7 years is what you should look at in this fund. SIP is a great way to counter volatility. हमने देखा है कि most of the हमारे जो ये NFO में maximum participation was from SIP investors, which is very heartening because that's the best way to counter volatility. तो अगर आप थोड़ा conservative या moderate type investor आपको invest करना हो, so and you're okay with volatility, then SIP could be a good way of entering this fund. But ideally, this is more for slightly more aggressive investors. अगर आपका risk profile अच्छा है, if you're okay with volatility, then I think this is a much better suited fund for you. Pratik, there is one crazy question, but I have to ask. So ये सारे large cap, mid cap, small cap, micro cap पे पहुंच गए. इसके बाद क्या nano cap के भी scope है? Is there opportunity there as well? I think हो सकता है. I think definitely आज तो नहीं होगा, but definitely I think 3 या 4 सालों में अगर आप US देखते हो, US में all market caps index होता है 3,500 stocks. और अगर इंडिया को अगर grow करना हो in the way in which we expect, we will see hundreds and thousands of companies coming in. So I'm very confident
that you'll be able to invest in nano caps and the I think the micro caps, I'm pretty sure will become large caps. That category will become a large cap. I'm guessing the next maybe decade or so. So I think the way India is headed, definitely there'll be a lot more action, a lot more listed companies. You will see a lot more action. So wo hoga, but I think today it's still a very small category. But next 4 5 years, hopefully we'll come up with a nano cap index fund in 5 years. Maybe Absolutely. less. Absolutely. Let's fingers crossed. Let's hope that day comes really soon, where the value starts flowing such deep into the broader end of the market. So, Pratik, it has been an amazing conversation so far. You walked us through so many different tenets and facets of microcaps. I feel it leaves us a whole lot more informed, and it empowers us to make such better decisions while investing. So I am super excited to see how does this microcap space evolve. And like you said, we will be watching this journey from microcap to large cap very closely over the next decade. And we are really optimistic, forever bullish on India. So thanks a lot, Pratik. It has been amazing having this conversation. You have shared some really amazing pearls of wisdom. At the risk of sounding cliched, you have shared some pearls of wisdom here that we'll be carrying back. Thanks a lot, Nirav, and thank you, Fisdom, for having me. And I look forward to having more conversations such as these with you. Thank you so much.